Uh, Very good morning, all of you. Today we will start our internship training on Linux. In that, first of all, we'll discuss which point we will cover, what are the key points in Linux. And after that, we will start from installation. We'll start from the scratch. You will get idea how to install the operating system. What are the different flavors of operating system? What is the difference between open source and enterprise software? So I will get the software, I will get the operating system, like that stuff. So first of all, we will start from the scratch. Before that, we will discuss how we will deal with Linux, what are the topics we will cover. So from first lecture, today we will discuss about the installation. After the installation, we will discuss about some theoretical point. These are the theoretical points. In that, what are the Linux terminology? In that, what is a kernel? What is a boot process? How the Linux will load, what is the file system, difference between partition and file system. We will do it all. Okay, boot process and basic input output switching. So in the first session, we will get some theoretical part. Half part is theoretical, and after that, we will start the some command line operations. Okay. So in the Linux file system, what are the file systems are available like NTFS, EFS, like that stuff. So different types of file format system are available. How will do the partition? How will create our own partition with having size 40 GB, 50 GB? We'll do it. So after that, we need to learn about something called as a package management system on Linux. See, in the Linux operating system, there are different types of flavors are available. For example, Ubuntu is one of the flavor of Linux. Fedora is a different than Ubuntu. Red Hat is also different. CentOS is there. OpenSUSE, also called as a SUSE Linux, is also a different platform, Mint operating system. So lots of operating systems flavors are available. In that, we need to deal with package management system. So what is package management system? Suppose I want to install some, let's say that I want to install a browser. So I want to install a browser on Ubuntu, Fedora, and we can say that OpenSUSE. These are the three different platforms. Okay. So the command to install Mozilla, or we can say that Chrome Firefox in Ubuntu is different than Fedora and is different than OpenSUSE. So ये तीनों में अलग अलग है, we can say that. So there are different way to install the any application or browser or any command, we can say that. Okay. So we will learn about the package management system. In that, RPM is there, DPKG is there, okay, M repository is there. So we will discuss about that, how we will install in Ubuntu. For example, in Ubuntu, if you want to install a browser, then how will install? We will install by using apt-get install and name of the application as a Firefox. If you want to install on SUSE, then we need to use a different. If you want to use or install on Fedora, then we need to use. For example, Fedora में install करना, then we need to use yum, and after that install, and after that name of application. We will do it the practical. So this is the package management system. So why I discover, or why I showing these things? What is the reason? Because see, if we want to learn Linux, we need to understand the basic structure. If you know the basic structure, then we can able to learn one by one, step by step, we can say. So that's why I'm showing this content. After the theoretical section, we need to understand the concept of command line operations. Like for example, I want to search file, I want to search folders, I want to view a file, I want to perform some user related operation. Use करना है. For example, if you want to add the user, if you want to add the group, like that stuff. After that operations, we need to perform some file related operation, ownership. When we create a file in Windows, by default ownership is Windows. Okay, जो भी user रहेगा Windows का, that owner is that person has ownership. Okay, so in Linux we can change the ownership. For example, in Linux operating system we have different types of user. Okay, assume that you have 1,000 user, and we need to change the ownership.
In that case, file ownership chapter will be covered. These are all the chapters. Okay, these are the sub chapters. After that ownership, we need to understand about file permission modes. Okay, for example, who can read the files, who can write the files. In the Linux, there is a best feature is called as a security, and that will be handled by using a file permission. Okay, for example, I am the owner of a file and I don't want to show, or we can say that access that file to any other person. In that case, I will change the permission with owner only. Okay, so in that case, security will be maintained. For example, unauthorized user wants to access your file. In that case, your file is not accessible. Okay, first of all, when other user wants to, or when other user trying to access your file, it will check the permission. If that person have a permission, then and then that file will be visible. Otherwise, that file will be not visible, or that file will be not accessible. Even the file will be not modified. In the permission chapter, we need to focus on the three things. So in that case, we need to focus on read command, write, and execute. Okay. So read has a numeric number 4. We all know that. Even diploma holder students also know that. Read, write, execute. In that, read contains a numeric number 4, write contains a numeric number 2, and execute contains a numeric number 1. Total addition of these three read, write, execute is numeric 7. Okay, we will do that practical also. उसमें आपको पता चलेगा how we'll do the permissions by using numeric number and by using some read R, W, and execute command also. Okay. After that, we need to focus on volume mount and unmount. Okay, volume is nothing but we can say that a partition. Now, partition and volume, these are, we can say that the partition and the file system, these are two different things. Okay, so let's consider that one example. While doing the practical, we'll discuss more. So let's consider one example. For example, what is a partition? Okay, so partition is nothing but it is a logical entity of the system. Okay, logical entity. For example, I have drives. Okay, in Windows we have C drive, D drive, E drive. These are the partition. And in that partition, how we will store the data? What are the some rules and regulation? Okay, so like in Linux operating system, there is a file system called as a XFS. Okay, in that case, it will specify the rules and regulation, how we'll store the data. In Windows, we have a file format extension as NTFS and FAT32. By using that, we can store the data. So simply, partition is just a logical entity, and whereas file system is a way to store the data. How will store the data? Let's say the example. For example, I want to build a home for my personal use. In that case, for to build a home, we require a land. So assume that this land area where we need to build a building, or we need to build a home, that land area is called as a partition. In that partition, in that land, we need to decide where is the hall, where is the open space, where is the bedroom, where is the kitchen. That means simply partition is a logical entity and file system is a way to store the data. Okay, so while creating that partition, we need to apply the concept of mount and unmount. In the Linux directory structure, we have an option called as a media and device. Okay, media and MNT. In that media and MNT, we will mount the immovable devices and movable. That means we can say that temporary devices and we say hard drive, like that, temporary devices like pen drive, and other devices like hard disk or CD-ROM. We can store, we can mount these devices on Linux structure. So to understand this volume mount and unmount, first of all, we need to understand the concept of partition. I covered this topic. Okay.
So first of all, we'll cover the partition. After that, we'll do it the mount and how we will mount the disk and how we'll write the data and how will, and even though same operation we need to perform on AWS also. So for example, if you have project, if your project required 100 GB of data, and in future the additional disk is required, in that case we will create additional disk, and after that additional disk will be attached with existing disk. So like that stuff we will do it in AWS, Amazon Web Services, and also we will discuss about why we choose AWS. There are different types of vendor in market. Different types of vendors are available as infrastructure as a services in market. Windows Azure is there, Google Cloud is there, and Amazon AWS is also there. So why we choose, we will discuss in later, and what is the reason behind that. So after that, we'll discuss about some processes. What is the process? For example, if you want to monitor the different types of tasks in Linux operating system, okay. And also we can say that now you are working as a system administrator in different company. In that case, your job is to monitor the different kinds of application which are running on the server. Why? Because see, a certain hardware has also a limitation. In that case, a certain hardware has a specific CPU usage. Kindly mute your account. A certain server has a specific limitation. Okay, so in that case, we can say that your CPU will work on 90%, 95%. Above the 90 and 95%, अगर आपका CPU work करता है, there is a maybe chances of crashing your server. So जैसे भी server crash होगा, तो in that case you or we can say that customer not able to access your website, customer not able to do that or we can say that perform any operation on that website. Let's assume that another way. Assume that we all know that there are different types of e-commerce websites are available. E-commerce, in that case, Amazon is there, Flipkart is there, Myntra is there. Lots of user accessing this website daily basis, or we can say that Facebook. In the social media, we have Facebook, we have Instagram. Okay, so in that case, अगर ऐसा होता है, in that case, the Facebook और e-commerce website जो भी है वो in that case अगर server fail होता है, in that case when server fails, any customer not able to access that website. Server failed की reason, there are different types of reasons. For example, hypervisor नहीं work कर रहा है, we can say that virtual जो operating system है, host operating system, there is not working, there is a shortage of network, any other reason, bandwidth का issue हो सकता है, internet का, whatever it may be. Okay, there are different kinds of reason तो network fail होने के लिए, or we can say that server fail होने के लिए. But in that case, a certain application we need to monitor by using the process command. Okay, for example, a certain software application or certain software process executing more times, okay, or they are using more CPU utilization. In that case, your job is we need to notify to the developer your application is accessing CPU usage about 80%, about 90% specific. And how to monitor things by using the process command. In that also we have two different commands. Top and stop command. Process is a non-static command, sorry, and top and stop, these are the dynamic command. So in that case, if you want to monitor the things which are actively working on the server by any other person, so we need to what we say, if you want to monitor that things, we have option of process top and stop command. We'll discuss it later also. Okay. So the next thing is shell scripting. It is also most important thing in programming. For example, let's say
if you want to interact with user, if you want to accept something, accept some values, information from the user, there is an interaction between user and developer. Okay, user and software, we can say that user and software. In that case, we can use a shell scripting. There are two types of shell scripting: non-interactive, that means there is a no interaction from the user, and interactive shell scripting, that means there is interaction from the user. अब ये कहाँ use करना है? When we where we can use this shell scripting? Assume that. So if you want to create the user in Linux system, how we'll do that? We will use add user command or user add command. Okay, we'll discuss about that also. So if you want to add 10 user, then we need to use add user command 10 times. Similarly, if you want to add 1000 user or thousands of user, in that case we need to use repeatedly add user command 1000 times. Okay, so एक user है, उसे repeatedly user add करने का task है. In that case वो हर बार user की command add कर रहा है, add user, username, like that stuff. It took some more time. Okay, to reduce that time, we will write a simple script which will create 1000 user within a second. Which will create 1000 user within a second. Or also we can say that if you want to take a backup daily basis, okay, so we will write a script for that. By automatically that script will be run and it will take the backup also. So shell scripting में ऐसा होता है. Okay. So after that there is a next chapter, it's called as a cron tab. Cron tab is also called as a future jobs. Okay, for example, after 10 days I want to take a backup. After 15 days I want to create a user. After 100 days I want to delete some user. After 500 days I want to create folder to take a to central backup, like that stuff. That means if you want to perform any future job, current में नहीं है, past में हम नहीं कर सकते, current में हम actually by using a command we can do that. For example, right now I want to take a backup, I will write a script for that and I will take a backup, or we can say that I will copy that folder and I will make it secure. So like that way I can able to take a backup. But in future, for example, at midnight 12 I want to take a backup on weekly basis. Okay, so weekly basis को मुझे backup लेना है, तो weekly मुझे at 12 o'clock at 2 a.m. morning, तो मुझे we can say that continuously work करना पड़ेगा, मुझे wait करना पड़ेगा up to 2 p.m. up to 2 a.m. up to 12 a.m. So in that case, cron tab will do job for our ourselves. Okay, so in that case आपके लिए ये cron tab job कर सकता है. For example, at midnight 12 a.m. आप स्क्रिप्ट लिख दो, आप cron tab बना लो. In that case, automatically at 12 a.m. backup will be created. In future, after 10 days, I want to create a user, write a cron tab for that now. And after 10 days, at particular timing, आपका cron tab create हो जाएगा. In that, we'll specify the 7 fields. इसमें minutes होता है, hour होता है, month होता है, day of week होता है, and after that command होती है. So like that 7 fields होते हैं इसके अंदर. So we'll discuss about that. But make a note of that. Cron tab is used for the future jobs only. Okay. After that, we'll discuss about the tar commands. So tar command is simply it is used for compression and decompression of algorithm. Everyone knows that the WinZip file or RAR file, the meaning is the same. WinZip and RAR file is used to compress and decompress the file. For example, I have 10 GB of file. When we apply the compression algorithm, that means tar, the size will be reduces up to 8 GB, up to 5 GB, like that. There are 3 different types of files: GG file, zip file, bzip file, and normal tar file. We'll discuss also more. Okay, so just make a note of that. Tar command is used for only compression and decompression of given file. Okay, compression means we need to reduce the size, and decompression means actual reduce the size को
वापस में एक्चुअल साइज में लाने के लिए। ओके, रिड्यूस्ड साइज जो भी होगी उसे अनकंप्रेस करके एक्चुअल साइज में लाना, दैट मींस अनटार। ओके, the next chapter is grep command. It's most useful and repeatedly used chapter in Linux operating system. It's called as a grep. Okay, in that case कैसे होता है? For example, if you want to view content of file, you want to check, if you want to view the content of file, then we will use grep command. Let's say assume that I have 1 MB of file, in that 1000 lines are available, and I want to search word XYZ among that file. Okay, so grep command will be applicable for only file. In Linux, we have 3 different formats. We can able to create file. Second, we can able to create folders, and third, we can able to create links. Okay, that grep command is applicable for only file. That means if you want to search some command, it will work like a search command. Okay, if you want to search the content of file को search नहीं करता है, content उसके अंदर के content search करना है, then we can use the graph. So इसके अंदर भी different types of options are available. अगर मुझे starting word ही use करना है तो मैं find कर सकता हूँ, या मुझे only word find करना है, case insensitive use करना है, okay, मुझे number के साथ में find out करना है, like that operation we can. At the end में मुझे ABC ही चाहिए जितने भी words है. For example, I have a dictionary, and in that dictionary last में मुझे ABC जहां जहां आता है वो पूरे words check करने हैं. So I can able to we can able to find that command, or we can able to find that information by using the grep. Make a note of that. Grep command is specially used for to check the content of file only. It is not applicable for the links. It is not applicable for the directory. After that, partition हमने अभी discuss किया था. What is the difference between partition and file system? So make a note of that. Partition is nothing but it will create logical entities. Okay. So like in Windows system, Windows operating system, we have D drive, E drive, C drive. These are a partition. In Linux operating system, we need to create the partitions. So we'll do it by using partition. Okay. So we need to check the disk, how many disks we have. After that, we need to enter into that disk. There are near about 95 to 96 options that are available. By using that, we can create different types of disks. For example, if you have to create swap memory, if you want to create primary, like that stuff. Okay. So make a note of that. In that case, in Windows, we can able to create 3 primary partitions only. अब इसमें ना 2 types है. Primary partition, and second one is a logical partition. Okay, पहले ये समझ लो कि why we use primary and why we use logical. See, primary partition, that means the partition where we can install the operating system. हम partition पे operating system install करते हैं, that term called as a primary partition. Okay, so in Windows operating system, if we have 3 partition, then that partition is primary base. Okay, if we have greater than 3 partitions, so in that case there is a chances of first 2 are the primary partition, or there will be also chances of only 1 primary partition and rest of all are the logical partition. Okay, so Linux system में भी ऐसा होता है, first 3 primary होते हैं. अगर 3 आपने primary create कर लिए तो we cannot able to create logical partitions. Okay, so if you want to create the logical partition, that means we will create 2 primary, we can able to create 1 primary, and third will be the extended. Okay, and अगर आपने extended create किया तो we can able to create number of logical partitions. Okay, इसका भी हम practical perform करने वाले, so you will get an idea how we'll create the partition. Okay, so this is about the partition chapter. After that, after that there is a new chapter. Next chapter is a swap memory. We the RAM, random access memory. Okay, RAM. Okay, so let's assume that if your application required greater than
existing RAM. For example, I have a laptop. In that case, I have 12 GB of RAM, and some application, some software wants our 14 GB RAM, but I have only 12 GB RAM. So next 2 GB will be created as a swap memory from the hard drive and will be treated as a random access memory. Okay, in that case, there is an issue of performance. See, when we use random access memory, there is no issue of performance. Okay, it has more read and write speed, random access के लिए. But in case your application required greater than existing random access memory, in that case आपके हार्ड ड्राइव से थोड़ा सा स्पेस निकाल के उसको रैम कंसिडर किया जाता है बाय यूजिंग स्वैप मेमोरी. ओके, इसके लिए ही प्रीरिक्विजिट, ये लर्न करने के लिए आपको पार्टीशंस पढ़ना पड़ेगा. इसमें पार्टीशंस क्रिएट करके उसका पार्टीशन टाइप आपको स्वैप करना पड़ता है. आफ्टर दैट वी विल फॉर्मेट एंड आफ्टर दैट वी विल माउंट दैट. Okay, so make a note of that. Yeah, swap memory is nothing but additional temporary memory. Additional random access memory will be treated as a swap memory. इसे थोड़ा सा another way से consider करते हैं, समझते हैं. We all know that gaming application, NFS or any other application, whatever it may be, just that application you have 8 GB of RAM, and that application, if you want to use that application, we require 12 GB of RAM. अब मेरे पास तो 8 GB है एक्चुअल में डेटा, एक्चुअल में मेरे पास 8 GB RAM है, एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट एप्लीकेशन ऑन माय लैपटॉप, माय डेस्कटॉप. इन दैट केस, डज दैट एप्लीकेशन एग्जीक्यूट? द आंसर इज यस. Application required a 12 GB of memory. We have 8 GB of memory. So rest of 4 GB will be treated as a swap memory. ये directly खुद से treat नहीं करता है. We need to create that. ओके हमें क्रिएट करके रखना पड़ता है. जैसे भी ग्रेटर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी के एप्लीकेशंस रैम की रिक्वायरमेंट लेके कर्नल के पास आते हैं. कर्नल इज वी कैन से दैट सोल ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. वो पूरे रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मतलब क्या होता है? प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज, दीज आर द रिसोर्सेस. एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय द कर्नल. ओके, जैसे भी एप्लीकेशन कर्नल के पास इंफॉर्मेशन लेके आता है, कर्नल विल चेक द रिसोर्सेस. अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है देन इट विल एलोकेट टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. नहीं है तो वो चेक करेगा स्वैप मेमोरी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, एक सम एप्लीकेशन वांट्स टू एक्सेस द रैंडम एक्सेस मेमोरी बट यू डोंट हैव दैट रैंडम एक्सेस मेमोरी. इन दैट केस kernel will check for the swap memory. If we have swap memory, then that application will be executed. If you don't have the swap memory, then that application will not executed. Make a note of that. So that as swap memory we require. After that, we need to perform some find command. Find command is applicable for file, directory and links also. जैसे मैंने grep के बारे में बताया था, grep is applicable for file only. But find command is applicable for file, file command is applicable for directory, file command is applicable for the we can say that links also. Okay, so why we use find? If you want to search any directory, if you want to search any file name, not content, by using find command we cannot able to find content of file. We can find file name. We have a certain thousands of file name, and among that we need to search ABCD, PQR, whatever it may be. Then we can able to find by using find command. If you want to find directory, okay, ABC, PQR, XYZ, SYCAC, TYCAC, like that directory name. Okay, if you want to find, then we can able to find by using find command. But we cannot able to view the content of file by using find command. Similarly, we can say that सर्च कमांड जैसे वर्क होती है ना, जैसे फाइंड कमांड परफॉर्म करता है. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन एप्लीकेशंस. आफ्टर दैट, फाइल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इट इज एन एडिशनल प्रिविलेज गिवन फ्रॉम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो परमिशन से भी हम यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंड स्पेशल परमिशंस भी होते हैं, उसे फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कहा जाता है. इन दैट केस सेट एफएसएल एंड गेट एफएसएल इज देयर to set the special permission for the user, and we can restrict that user. We can provide additional feature also by using file access control. So we can able to learn this concept. So if you want to learn this concept, first of all we required
infrastructure. We can say that we require a installation part. Okay, so now today we'll do installation. So before that we'll discuss about the flavors. एक बार थोड़ा थोड़ा difference discuss कर लेते हैं. What is the difference between enterprise software, or we can say that what is the difference between open source and enterprise में क्या difference होता है? What are the different flavors? Actually in the Linux there are 10 flavors, and among that 10 flavors these 6 are most usable. So मैंने जो usable होते हैं वही मैंने list out किया है. Different है वो भी मैं आपको share कर देता हूँ. There are total 10 flavors of Linux operating system. So ये पॉपुलरिटी के हिसाब से मैंने दिया है. इसके अंदर ओपन सोर्स फर्स्ट 5 आर द ओपन सोर्स एंड लास्ट वन इज enterprise software. So that means if you want to use Red Hat, then we need to pay certain amount to that company, so they will give enterprise related software or operating system for use. Okay, so what is open source? We'll discuss. But these 5 Ubuntu operating system have differ than Fedora. Fedora is differ than OpenSUSE. CentOS ये Fedora के ही कैटेगरी में वर्क होता है, and Kali Linux ये Ubuntu की कैटेगरी में वर्क होता है. But these are the 5 different flavors of operating system, and 6th one is a Red Hat. So it is an enterprise related Linux. So if you want to use that operating system, we need to pay the amount. Okay, फ्री ट्रायल वर्जन्स भी अवेलेबल है इसके 30 डेज के. अगर आपको रेल 7 रेल 8 अभी प्रीवियस रेल 6 भी था, रेल 7 रेल 8 यूज करना है, देन वी कैन यूज फॉर 30 डेज. एंड जैसे भी 30 डेज होते हैं तो वी नीड टू बाय द सब्सक्रिप्शन. So we need to pay some amount to that Red Hat company, and after that they will provide a key, and by using that key we can able to access Red Hat enterprise software. Okay, so these are the flavors. So now we'll discuss what is the difference between open source and paid. So according to NIST, National Infrastructure Library, so ये definition है open source software की, OSS की. What is that? Software that can be accessed, used, modified and shared by anyone. ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसको हम एक्सेस तो कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसे यूज भी कर सकते हैं फ्रीली विदाउट पेइंग अ सिंगल पे. विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं. वी कैन एबल टू एक्सेस, वी कैन एबल टू यूज, वी कैन एबल टू मॉडिफाई. फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे यूआई चेंज करना है या लाइक दैट, सोर्स कोड इज अवेलेबल. एंड आल्सो वी कैन शेयर आवर चेंज्ड यूआई to any other person, called as a open source software. Simply क्या कह सकते हैं इसमें? It's free to use and free to modify. ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं. इसमें एक एडिशनल क्यूरी है. Can I able to say that every free software is also called as an open source software? The answer is no. फ्रीली अवेलेबल जितने भी सॉफ्टवेयर है उसे ओपन सोर्स नहीं कहा जाता है. जैसे वी कैन से दैट Ubuntu is open source software. We can able to access, we can able to use, we can able to modify, and we can able to freely shareable, and that application is freely available mainly. So that application is a open source. But मुझे Microsoft Windows का ऑफिस का क्रैक मिल गया है या सर्टन कीज उसके चेंज करके मुझे एक्सेस मिल गया है, तो Microsoft Office is a not open source. It is an enterprise related application, or we can say that it is a commercial software. So if you want to use a Microsoft Office 2007, 12, 15, 16, whatever it may be, we need to pay certain amount. So it is not open source. Okay, so it's wrong. Every free software is called as a open source software. ऐसा हम नहीं कह सकते. But every open source software is freely available. ऐसा कह सकते. जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा कहना वैलिड होता है. बट एवरी फ्री सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज ओएसएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये गलत होता है. ओके, जैसे लिनक्स के अंदर लिब्रे ऑफिस है, इट इज आल्सो ओपन सोर्स. ओके, कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है? कमर्शियल सॉफ्टवेयर इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेयर only the person, team, group of person
or organization, company that created, it can be modified also. They have exclusive rights over the software. वो मॉडिफाई भी होती है, पर ये राइट्स किसके पास होते हैं? ओनर के पास होते हैं. दैट मीन्स इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल. इसके अंदर फ्री अवेलेबल नहीं होते हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, विंडोज 8.1 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा था, विंडोज एक्सपी था, 8.1 है, 10 है, 7 है. दीज आर ऑल कमर्शियल सॉफ्टवेयर. विंडोज एक्सपी है, कैल सॉफ्टवेयर है सर्वर के, विंडोज सर्वर 2007 है, 15 है, 16 are all commercial software. If you want to use that software, then that means we need to pay a certain amount to that person. So यहाँ आपको certain amount pay करना पड़ता है to use that software. अगर नहीं pay करते हो, then we cannot able to get the we cannot able to access that application. Just 1 minute. Okay. So there is a difference between open source and paid. Or we can say the difference between open source and commercial software. Make a note of that. Open source is nothing but free to use and free to contribute. Okay. But this definition, above definition, is created by NIST. Make a note of that, and it is a standard definition. अगर कंपनी में इंटरव्यू में आपको कुछ ने पूछा व्हाट इज OSS, तो we need to specify the software that can be accessed, used, modified, and shared by the anywhere called as a open source software. Okay. Now the next part, we need to perform this operation: partition, process, shell, command line operations, cron tab. We require an operating system. So in that case, we will choose Ubuntu. Okay. So यही choose क्यों करना है? Why we not choose Fedora? Why we will not choose CentOS? So इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. Ubuntu के स्टेबल वर्जन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फेडोरा. फेडोरा के रिलीजेस जो होते हैं वर्जन्स के, ये आफ्टर 6 मंथ आते हैं, और इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द Ubuntu. Similarly, OpenSUSE का भी सेम प्रॉब्लम है एंड CentOS का भी सेम प्रॉब्लम है. That's why we will choose Ubuntu, but we will do it Fedora also, we will do it CentOS also. Okay. अगर आपको इंस्टॉलेशन में दिखाना है तो मैं ये बाकी के भी इंस्टॉलेशन आपको दिखा देते हैं, और आपको परफॉर्म करना है तो यू कैन एबल टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन, बट होल वी विल डू इट ऑन Ubuntu ओनली. ओके. सो अगर मुझे Ubuntu पे परफॉर्म करना है, देन वी नीड टू इंस्टॉल दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. सो prerequisite, we require a ISO image. Okay, so from internet we need to download. आपको ये download करना है. The size of that Ubuntu operating system is near about 2 GB, and we need to also download one additional software. We have two choices. See, installation of Linux operating system. We have two choices: VMware Hypervisor and VirtualBox Hypervisor. What is Hypervisor? It is a group of hardware on that we can install operating system. Okay, virtual machine create करने के लिए VM stands for virtual machine. If you want to create a VM virtual machine, तो आपको ये दो सॉफ्टवेयर यूज करने हैं. अगर आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने हैं, then we have another solution. आपके लैपटॉप पे ही आप Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, वेदर इट इज Ubuntu और वेदर इट इज Fedora, आप इंस्टॉल करके ले सकते हैं और उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं. अब इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि what is the difference between Ubuntu and Fedora? See, if you want to create a user, Ubuntu में भी same command है, Fedora में भी same command है, open source, CentOS, Kali Linux and Red Hat, all Linux operating system have same command. If you want to perform find, tar, grep, all the command will be executed, but change क्या है? High level package and low level package में change है, just that things. For example, installation, service. इंस्टॉलेशन और सर्विस रिलेटेड जो कमांड्स हैं, ये Ubuntu के अलग है, फेडोरा के अलग है, एंड ओपन सोर्स के अलग है. बाकी 90% कमांड्स आर सिमिलर. 90 we can say that 90 to 95% कमांड्स आर सिमिलर. उसमें चेंजेस
नहीं है. So for that we required a VMware and VirtualBox. Okay, इन दोनों के इंस्टॉलेशन मैं आपको आज बताऊंगा. So I will suggest install VMware, but आपको VirtualBox भी पता होना चाहिए. I will do that. So ये आपको VirtualBox का भी प्रैक्टिकल मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा. But at the end we will use VMware only. Okay. If you don't want to use VMware and VirtualBox, so make a note of that. At least we required a Linux operating system installed on your hard drive. Okay. So now we will do that Linux operating. I will share this PPT after completion of this lecture. I will create that PPT. I have created that PPT, so I will share with you after the end of that session. Okay. So now how will install the VMware? Download the VMware software. First step. Here is a link available. Just right click on that. Go to that download center, and you can able to download that software. अब इसके अंदर थोड़ा सा ना चेंजेस होते हैं. See, there are two types of architecture. Here I am showing 64-bit. There are two types of architecture now available in market: 32-bit architecture and 64-bit architecture. अभी 32-bit अगर older laptop है greater than 5 years, so इसके अंदर possibility होता है Windows 7 है तो 32-bit अवेलेबल है एंड 64-bit भी अवेलेबल है, या Windows 8 में भी वर्जन्स में भी अवेलेबल. सो मेक अ नोट ऑफ दैट. ये चेक कर लो. चेक कहां से करना है आपको? माई कंप्यूटर ओपन करना है आपको. इन दैट माई कंप्यूटर में आपको दिस पीसी में जाना है. क्लिक ऑन दैट दिस पीसी. राइट क्लिक ऑन दैट दिस पीसी एंड क्लिक ऑन द प्रॉपर्टी. इसके अंदर आपको आर्किटेक्चर दिखाई देगा. आपका कौन सा आर्किटेक्चर? सी, आई हैव 12 GB ऑफ रैम. आई हैव i5 प्रोसेसर विथ 5th जनरेशन. Maximum RAM size is 12 GB, maximum is 16 GB. Among that I installed 12 GB. System type is 64-bit operating system. Okay. तो इसके ऊपर 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता. अगर आपके पास 64-bit आर्किटेक्चर है तो उसके ऊपर 32-bit इंस्टॉल हो जाएगा, बट 32-bit के ऊपर 64-bit आर्किटेक्चर इंस्टॉल नहीं होता है. सो मेक अ नोट ऑफ दैट. अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर. Okay. अगर आपके पास 32-bit है तो आप ऐसा डालो VMware सॉफ्टवेयर, VMware प्लेयर फॉर 32-bit. सो उसका लिंक जनरेट करेगा. ओके. सो मेरे पास अभी 64-bit है तो मैं 64-bit का आपको दिखा रहा हूँ. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है सो मुझे बताओ. इन दैट केस आई विल शेयर द लिंक. ओके. सो you can click on that link. The size of that application is near about 215 MB. डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना है ये मैं बता दूंगा. ओके. ऐसा आपको विंडोज में नाम आएगा और ये ऐसा बटन आएगा. जस्ट वी नीड टू क्लिक ऑन दैट बटन एंड द सर्टेन एप्लीकेशन विल बी डाउनलोडेड विद इन 5 to 10 minutes अकॉर्डिंग टू द स्पीड. ओके. सो जैसे आपको कहाँ जाना है, जस्ट ओपन अ ब्राउजर. इन दैट टाइप VMware download, click on that. So myvmware.com, click on that. And after that, see the bottom is the latest version. Okay, this one is the latest version. Click on the go downloads. After that we have different versions: 16.1.1, 16.1.1 for Linux. So we need to download for the Windows operating system. Click on that download button. Certain application will be downloaded. Right now I have that application, so मैं download नहीं करूँगा. I have created that folder also. So जो भी सॉफ्टवेयर मुझे लगते हैं in that case, so I have already downloaded that application to save the time. Linux plus AWS training. In that we require these three software. We required operating system. अब इसके अंदर भी है Windows Ubuntu 2.0 वर्जन यूज कर रहा हूं मैं. अगर आपके पास 32-bit आर्किटेक्चर है तो आप Ubuntu 16.04 यूज करना है. okay. मैं यूज कर रहा हूँ करंटली 20.0 पर. अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दो. आई विल रिप्लाई ऑन दैट योर क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है. सो राइट नाउ अगर आपका आर्किटेक्चर 64-bit है देन आई विल सजेस्ट यूज 20.04. अगर आपका आर्किटेक्चर 32-bit है तो आपको यूज करना है 16.04. सो इसका साइज नियर अबाउट 2.8 GB है.
इसकी लिंक भी मैंने पीपीटी के अंदर दिया है, आप डाउनलोड कर लो इसको। 2.8 GB का एप्लीकेशन है। After that, we also required a VirtualBox and VMware player. Okay. So now we are installing the virtual VMware. So it is a commercial software. You make a note of that. If you want to use for your company, so we need to pay the amount. But ये नॉन कमर्शियल सिंगल यूजर के लिए होता है. देयर इज नो नीड टू पे अमाउंट फॉर नॉन कमर्शियल यूज. Single person can use that application. Okay. Now assume that your application is downloaded. Now we need to install. Let's say अभी पीपीटी के अंदर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली वी विल इंस्टॉल इट. उसके बाद आपको पता होगा कि कैसे वर्क होता है. So now this one is a VMware player. Right click on that and run as administrator. Okay. अभी आपके पास different types of privileges का भी अकाउंट हो सकता है. That means you have a normal user, you cannot able to permit to install the software. So in that case आपको run as administrator करना है और उसका admin का password जो भी होगा वो enter करना पड़ता है. Some cases. Okay. Right now I have already admin login, so administrative login, so मुझे नहीं पूछेगा password. But अगर पासवर्ड पूछता है तो आपको एंटर करना पड़ेगा. इन दैट केस इंस्टॉलेशन इज बिगिन. सी will get the window. इसका मैंने पूरा पीपीटी बनाया है. I will share that PPT. According to that, you can install that operating system. And also, I have created the video also. At the end of session, after 2 to 3 hours, I will upload it on YouTube page, company YouTube page, so you can able to access that page also. Or if you want to revise the session, if you want to revise the commands, so you can able to watch that video repeatedly. Okay. So in the Linux, we require a practice. If you have a practice regularly, then you can easily understand the Linux. अगर practice नहीं करते हो, अभी मैं भी practice नहीं करता हूँ 6 to 7 months, so everything will be forward. Okay. So make a note of that. Everything will be depend on the practice. So इसलिए practice continue करना पड़ेगा. Click on the next. Accept the agreement. Open source agreement जो भी है या commercial agreement है वो read करना पड़ेगा. Okay. Click on the next. Yeah, add VMware workstation, make as it is, and this one is a path where you want to install that VMware. Okay, so कहाँ install करना है उसके बारे में ये path पूछ रहा है आपको. Next, terms and condition, check for update, make that uncheck, and this one is also uncheck. We'll create the logos, desktop, and start menu folder. After that, install. It took 1 to 2 minutes to install, or less than 1 according to your speed. ये लैपटॉप की स्पीड जो अवेलेबल है उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन टाइम लेगा, बट नॉर्मली इट टुक 1 to 2 minutes only. Let's wait for a few seconds. Now it's installing virtual network drivers.
Single Ethernet card will be used by the VM also. Done. Your installation is successfully done. Click on the finish. Part 1 will be successfully created. Check the PPTs. Install VMware, end user agreement, custom setup, user experience setting. Kindly uncheck these things. Okay. So ये करने के बाद में आपको certain extra next installing VMware Workstation 16 Player. It's free for non-commercial use only. See, we have got two options, license and finish. We need to click on the finish. Okay. If we are a commercial user, then we need to enter the key. But we are a single user, then in that case, we'll click on the finish only. Okay, we need not enter license. And after that, we'll get like view. Okay, home screen ऐसे दिखेंगे. Let's check out. In the desktop, a certain logo will be available. See, this one is a logo. यहाँ से भी अवेलेबल होगा और आपको यहाँ VMware एंटर करने के बाद में आपको वो भी आ जाएगा. चेकआउट ऐसी स्क्रीन दिखाई देना चाहिए आपको. अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस दिखा रहा है बिकॉज मेरे पास पहले अवेलेबल ओएस थे तो इसके लिए उनके नाम्स वगैरह दिखा रहा है. इथिकल हैकिंग के लिए मेटास्प्लॉइट है, काली है एंड उबुंटू है. ओके, सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग. मेरे पास एक भी वीएम नहीं है. वीएम स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मशीन. ओके, टेम्पररी मशीन. हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने क्या किया है, वर्चुअल इंस्टेंसेस हमें लॉन्च करना है. so, हमारे पास ये अवेलेबल. सो ऑलरेडी इफ यू हैव वीएम तो आप ओपन कर सकते हो. अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो. अब आपको पेड सॉफ्टवेयर में जाना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं. इफ यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प देन क्लिक ऑन दिस लिंक. राइट नाउ वी डोंट हैव एनी वीएम. राइट नाउ वी डोंट हैव एनी वर्चुअल मशीन. So let's create one virtual machine. Make a note of that. Before creating this virtual machine, we required a ISO image of operating system, any operating system. Okay. So right now, I already said, if we have 32-bit architecture, download 16.0. अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बोलो, मैं I will share the link also. Okay. अगर 64-bit architecture है, then download and install 24.0. So we require this Ubuntu image. Okay, अगर इसकी प्रॉपर्टीज आपने चेक किया 2.6 GB है, इसकी प्रॉपर्टी अगर चेक किया तो ये ISO इमेज है. ओके, EMD 64 ये ISO इमेज है और ISO इमेज होने के बाद में ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते. सी इमेज फाइल हैविंग एक्सटेंशन .iso दिखाई दे रहा है, उसका एक्सटेंशन क्या है .iso. सो मेक अ नोट ऑफ दैट. ये आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए. ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो और उसके बाद में अगर मैंने लिंक भी दिया है, डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो. नाउ we'll create an instance, we'll create new virtual machine. Click on that. By using, there are three ways we can install that operating system. See, directly we'll provide the ISO image and it will start the installation. If we have CD-ROM, DVD-ROM, by using that we can also install. And third option, I will install the operating system later. So make a note of that. Choose third number point. First of all, we need to set the configuration. हमारे पास जो VM आने वाला है, virtual machine Ubuntu का हम create करने वाले हैं. In that case, okay, in that case, आपको task क्या करना होगा? First of all, we need to set the hardware. I have 12 GB of RAM. Among 12 GB of RAM, how many RAM will be used at VM? So as a specification, I have two different hard drive नहीं है मेरे पास. I have two different SSD, solid state drive. So among that, how many, or we can say that what will be the size of disk where you want to install Ubuntu? We need to specify. In processor, I have 4 CPU. IP V5 है मेरे पास. Sorry,
i5 प्रोसेसर है मेरे पास. In that i5 processor, i3 or i5, 4 CPUs are available. Among that, how many CPUs we need to use? So ये certain configuration आपको पहले करना पड़ता है. For that, we will use third number option. I will install the operating system later. The virtual machine will be created with a blank hard disk. Okay, ये blank hard disk के साथ में create हो जाएगा. और जैसे भी हम यहाँ path देते हैं, in that case our operating system will be. Click on next. Now these are the main three key players of operating system: Microsoft, Linux, and other. So here I will select the Linux. If you want to install Fedora, यहाँ drop down list है. Click Fedora. तो ये Fedora का वर्जन जो भी है वो दिखाएगा. Red Hat करना है, SUSE करना है, SUSE का दिखाएगा. Okay, different types of operating system are available. Okay, so इसमें मुझे choose करना है Ubuntu. ये only name है. Make a note of that. इससे कुछ भी नहीं होता. For example, यहाँ मैंने Fedora लिया और इंस्टॉलेशन के टाइम पे iOS इमेज मैंने Ubuntu को दिया, तो कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं, नेवर. सो जस्ट इट्स नेम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करने वाला है, दैट्स इट. Here we need to specify the name. I will use SYCSC. Okay. Instance का नाम है SYCSC. Make a note of that. अब ये कहाँ इंस्टॉल करना है ऐसा पूछ रहा है. हमने VMware इंस्टॉल कहाँ किया है? C ड्राइव पे, बट एक्चुअल में हम डिस्क कहाँ रखेंगे? अनदर ड्राइव पे. व्हाट इज द रीजन? C, अगर मेरा डिस्क आप देखोगे तो C कैसा होता है? कंप्लीटली फुलफिल होता है, उसमें स्पेस बहुत कम होता है. See, I have C operating system having 226 GB, and among that only 66 GB is free, and I have D drive, among that 132 GB is free. So in case में क्या करना है आपको? Another drive पे create करना है. So just click on that browser. ब्राउजर पे क्लिक करो और दिस पीसी सर्च करो, या वी कैन से दैट डी ड्राइव पे सर्च करो. यहाँ आप एक फोल्डर क्रिएट करो. हियर आई विल क्रिएट. क्लिक ऑन दैट, मेक अ न्यू फोल्डर. क्लिक ऑन दैट, मेक अ न्यू फोल्डर एंड राइट डाउन SYCSC Ubuntu. SYCSC Ubuntu. Okay. Click on that folder. See, D drive SYCSC Ubuntu is available. Now we'll check on D drive whether that folder is created. D drive, check out SYCSC Ubuntu. The folder is created by application. Okay, so ये application के through ये folder create हुआ है. That means आपकी जो VM रहेगी, उसका जो स्टोरेज रहेगा, उसके जो कमांड एवरीथिंग रहेगा, डिस्क रहेगी, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? डी ड्राइव में. आपको सेम ऐसा ही परफॉर्म करना है. डू नॉट इंस्टॉल ऑन C ऑपरेटिंग सिस्टम. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको वर्क नहीं होगा, बट देयर इज अ चांसेस टू क्रैश योर सिस्टम. क्यों? बिकॉज आपके पास अगर 60 GB भी अवेलेबल है और उसका Ubuntu का साइज ग्रेटर देन 60 जा रहा है, तो ये विंडोज भी नहीं चलेगा और VM भी नहीं चलेगा. सो इन दैट केस मेक अ नोट ऑफ दैट. दूसरे ड्राइव पे ही डालो जिसमें स्पेस अवेलेबल है. क्लिक ऑन द नेक्स्ट. अब ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द डिस्क कैपेसिटी. अब Ubuntu इंस्टॉल करना है तो मिनिमम कैपेसिटी इज 20 GB. ओके, आपका डिस्क का साइज देखो, पार्टीशन का साइज देखो. आप 20 GB रखा तो भी चलेगा, बट आई विल सजेस्ट मेक इट 40 GB. ओके, सो यहाँ लिखा है रिकमेंडेड साइज फॉर Ubuntu 64 बिट इज 20 GB. अगर 15 GB लेता हूं तो ये इंस्टॉल कंप्लीट नहीं होगा. ओके, मेक अ नोट ऑफ दैट. अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं. स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क एज अ मल्टीपल फाइल. That means your application or operating system will be broken down into certain pieces. जैसे मैं अगर 40 GB कंसिडर करता हूं तो मैं यहाँ स्प्लिट यूज करता हूँ, स्प्लिट टेक्निक. दैट मीन्स 40 GB डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 20 पार्ट्स, 30 पार्ट्स, लाइक दैट. बट यहाँ आपको ऑप्शन क्लिक करना है यूज सिंगल डिस्क. क्यों? क्योंकि अगर उसका बैकअप आपने लेके रखा तो एनी टाइम ये अनइंस्टॉल करने के बाद भी एनी टाइम एनीवेयर वी कैन यूज दैट. और स्प्लिट में क्या होता है, उसे मर्ज करके आपको यूज करना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई यूज store virtual disk as a single file. That means a single file will be created. अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि सिंगल फाइल कैसे क्रिएट होती है.
आप ये प्रैक्टिकल होमवर्क करते समय ये करना है आपको कि आपको एक इंस्टॉलेशन सिंगल के साथ करना है और एक इंस्टॉलेशन आपको मल्टीपल के साथ में करना है। ओके, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सिंगल में सिंगल डिस्क क्रिएट होता है, स्प्लिट में मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आज ही करना है आपको, आज मतलब एक 24 आवर्स के अंदर, कल तक टाइम है आपको ये परफॉर्म करके मुझे सेंड करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ अभी इसने बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन लिया है। सी, हार्ड डिस्क साइज तो हमने स्पेसिफाई किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने दिया है, नेम भी हमने दिया है, लोकेशन भी हमने दिया है। बट ये जो अदर डिवाइसेस है ना, अदर डिवाइसेस, ये नेटवर्क टाइप एंड अदर डिवाइसेस एंड मेमोरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, आई वांट टू कस्टमाइज दैट। ओके, सो क्लिक ऑन दैट कस्टमाइज। आई हैव 12 GB ऑफ रैम, अमॉन्ग दैट मुझे 8 GB देना है, ये कैसे दैट 10 GB देना है। ये आपके कर्सर अवेलेबल है, स्केल अवेलेबल वर्टिकल, इसके पास से आप कन्वर्ट कर सकते। ओके, अब दीज आर द प्रोसेसर। अब देर आर डिफरेंट प्रोसेसर। प्रोसेसर पहले समझना पड़ता है। प्रोसेसर इज नथिंग बट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन दैट केस देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर्स आर अवेलेबल। आपने अगर लिनक्स पढ़ा होगा, सॉरी प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। The starting processor is a 4004 4-bit processor. After that there is a 8008 8-bit processor. उसके बाद में 16-bit processor आया था 8086। उसके बाद में 80126 286 386 और उसके बाद में P1 P2 P3 P4। आफ्टर दैट डुअल कोर कोर 2 DO और उसके बाद में फिर i3 i5 i7 नाउ i9 इज आल्सो अवेलेबल। ओके, गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। सो ये जो प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर ना सीपीयूज का काउंट होता है। नाउ आई हैव i5 प्रोसेसर, आई हैव टोटल 4 सीपीयू। सी, मेरे पास i5 है तो इसके अंदर 4 है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर अटैच किए तो ये 32 बिट तक, 32 प्रोसेसर तक जाता है। बट आपको पता है कि आपके पास i5 है, i5 में और i3 में 4 ही कोर होते हैं। अगर आपके पास C2D है तो 2 ही कोर है, तो उस केस में आपको एक ही सिलेक्ट करना है। बट राइट नाउ आई हैव 4, सो आई कैन सिलेक्ट 2 प्रोसेसर और इवन आई कैन सिलेक्ट 3। 4 इसको नहीं करना है, क्यों? बिकॉज इट इज एन वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन किसके ऊपर होस्ट है? विंडोज पे। तो विंडोज भी चलना चाहिए तो ही ये एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेक अ नोट ऑफ दैट। मैक्सिमम आप 3 तक यहाँ ले सकते हैं। और ये वर्चुअलाइजेशन है, इसे चेक करके ऐड करना है, ये फर्दर इंस्टॉलेशन के लिए लगता है, जस्ट चेक इट। नेक्स्ट, ये इसके बारे में हम थोड़ा ऑटो डिटेक्ट के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आफ्टर दैट नेटवर्क टाइप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेट नेटवर्क एंड ब्रिज नेटवर्क। तो यहाँ हम क्या करते हैं, नेट नेटवर्क ही यूज करते हैं। नेटवर्किंग में हम देखेंगे, जस्ट मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूँ व्हाई वी यूज नेट नेटवर्क। सी, एग्जिस्टिंग फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर अगर आपको वीएम वर्चुअल मशीन को रिले करना है, होस्ट करना है उसके ऊपर, देन वी विल यूज नेट नेटवर्क। दैट मीन्स अ सिंगल राउटर कैन बी मैनेज। एक सिंगल नेट राउटर को ही ये नेट मैनेज करता है। अगर आप DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल से आईपी एड्रेसेस ले रहे हैं तो नेट लेना। 2 डिफरेंट नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना है तो उसके लिए ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है। ओके, उसके लिए ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए अदर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फेडोरा और सेंटोस क्यों यूज नहीं करता है, तो कहता हूं क्योंकि उसके अंदर ब्रिज करना पड़ता है और इसके अंदर डायरेक्टली हम नेट से यूज करते हैं। ओके, so make a note of that. Here we will use NAT network. To connect 2 different networks, we will use bridge, and to relay on existing physical network, we will use NAT network. बाकी कुछ भी changes नहीं करना है, as it is. Okay. After that, ये क्लिक करना है न्यू CD एंड DVD। अभी हमने हार्ड ड्राइव तो क्रिएट कर लिया, बट इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए आपको ISO का पाथ देना पड़ता है। इसमें 2 ऑप्शंस है, यूज फिजिकल ड्राइव, ओके, एंड यूज ISO इमेज। अगर आपके पास DVD ROM है, CD है, DVD है, उसके अंदर डायरेक्टली क्लिक करके ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं है, देन वी नीड टू प्रोवाइड ISO इमेज। नाउ आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड स्टोर्ड इन ए D ड्राइव, सो क्लिक ऑन दैट ब्राउज। इसको पाथ देना है D ड्राइव का,
लिनक्स प्लस AWS ट्रेनिंग, इसके अंदर मैंने ये Ubuntu का iOS इमेज रखा है. क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन ओपन. सबका पाथ हो गया. नाउ कस्टम हार्डवेयर भी हो गया, पूरा सिलेक्ट कर लिया है. नाउ क्लोज, नाउ चेकआउट. सी प्रीवियस अर्लियर द मेमोरी साइज वाज 4 GB, तो मैंने इसे चेंज कर लिया. 2 कोर्स, 2 CPU, मतलब 2 कोर्स टोटल. i5 के अंदर और i3 के अंदर 4 कोर्स होते हैं. एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन फिनिश. जैसे भी फिनिश करते हो तो लेफ्ट साइड पैनल में आपको आपका VM दिखाई देगा. अभी ये VM कंप्लीट है क्या? नहीं, जस्ट कस्टमाइज पार्ट हमने कंप्लीट किया है. अभी नाउ वी नीड टू इंस्टॉल. Customize part we have completed. Now we need to install that operating system, and after that we need to perform certain operations on that. Okay, हम certain operations भी perform करेंगे, like basic host name कैसे करते हैं, host name change कैसे करते हैं, like that stuff. Okay, so click on the play virtual machine. Here we need to click on that virtual machine, and these controls are available. When we click on this also, automatically the system will be started. We have these 4 different options. अगर सिस्टम चालू होने के बाद में we can shut down the guest, we can suspend the guest, and we can restart also. Okay, first of all we need to install. So click on the play virtual machine. So by using this way we can able to install. Now it will took 10 to 15 minutes for SSD and 20 to 25 minutes for HDD. Okay, so what is HDD and SSD? HDD stands for hard drive and SSD stands for solid state drive. Okay, क्या डिफरेंस होता है? HDD की रीड एंड राइट की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ड्राइव. ओके, सो रैम भी SSD के टाइप में ही वर्क होता है. So I have SSD, so it took 10 to 15 minutes for installation. So अगर आपके पास HDD है तो it took 20 minutes to 25 minutes to 30 minutes max. So software update, I don't want updates. Click on remind me later. I don't want to update. It will check the disk whether your space is available, 40 GB space is available or not. अब ये इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? सी यू हैव दैट एप्लीकेशन. अब इसके अंदर मैं अगर क्लिक करता हूं तो मैं बाहर नहीं आ सकता. सी राइट नो मैंने अभी क्लिक किया है. चेक कर रहा है इसकी वजह से बाहर आने के लिए आपको अगर कंसोल के अंदर जाते हैं तो बाहर आने के लिए आपको एट अ टाइम कंट्रोल प्लस अल्ट दबाना पड़ता है. तो ये माउस का जो कर्सर है इसको रिलीज कर देता है. Checking finish with no error. सी अब मैं कर्सर के अंदर है, मैं माउस मूव कर रहा हूँ. बाहर आने के लिए आपको कंट्रोल प्लस अल्ट करना पड़ेगा. सो बाहर आ गया. फिर अंदर जाता हूँ, कंट्रोल अल्ट करने के बाद में माउस का कर्सर बाहर आ गया.
certain UIs came. See, we have two options right now. Try Ubuntu Live CVD. Okay, so this is an option for example, if you don't want to install the operating system, you need to work for some 2 to 3 hours, and after that, when we close that instance, the whole information will be deleted. Okay, so in that case, we will use try Ubuntu. But right now, we need to perform certain operation repeatedly. So here I will do that. Install Ubuntu operation. Click on that. After that, keyboard layout, do not change anything. So in that case, as it is जो है उसे ही रहने दो. Default keyboard जो है. On the continue. Now यहाँ options है. There are two different options. Normal installation and minimal installations. So first of all, uncheck this download update, and while installing Ubuntu, I don't want to update my Ubuntu, and click on the normal installation. Okay, so आप जब installation करते हो तो उसे normal installation पे ही click करना है. Okay, further application media player वगैरह होता है. Right now I will do it minimal installation because we don't want to waste more time. So आप करते समय normal installation करना. So right now I will do it with minimal installation on that. Yeah. Now let's this is running. Took 10 to 20 minutes. For practical, we require the OS. Now, do not change anything. We are using Ubuntu operating system on VM. Okay, so do not try this installation on direct single disk. It will erase all disk. Okay, so make a note of that. ये पूरा डिस्क इरेज करेगा. अब हमने क्या किया है 40 जीबी उसको स्पेस दिया है एम्प्टी में से. ओके, तो वो 40 जीबी को ही इरेज करेगा. बट ये डायरेक्टली व्हेन वी इंस्टॉल दिस थिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विंडोज, तो ये विंडोज भी डिलीट कर देता है. तो इंस्टॉलेशन जो भी करना है ये वीएम के ऊपर ही करना है. मेक अ नोट ऑफ दैट. ओके, एज इट इज रहने दो, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ. A certain message will be created. See, a primary partition will be created and rest of secondary partition. Okay, logical partition will be created. दो ही partition create किए उन्होंने, उसकी information है. Click on continue. If you want to change तो ये change भी कर सकते हैं हम later on.
Yeah, now we need to set the time zone. So here by default it will be selected as a Kolkata. On the next, if you want to select different time zone, to select हो सकते हैं, but we'll select the India. Select the time zone as 5:30. And continue. Yeah. After that, we need to specify the name. Reserved names we cannot able to use. See, for example, my PC name is admin. Okay. The name it will use talk with computer. So while creating that, it will generate an error. So let's that. See, the username entered admin is reserved for the use by the system. Please select the different one. Admin name use कर सकते हो. For example, here we use my name. This one is your host name. So password जो भी enter किया है याद रखना आप. So now wait for 10 minutes. Okay. So automatically completion होने के बाद में we need to restart the VM and after that VMware का operations perform करके देखेंगे. Okay. Just wait for 10 to 15, 10 minutes maximum. After 10 minutes, the installation will be completed. Okay. Wait for 10 minutes. So after completing this, we'll get message installation is complete. You need to restart your computer in order to use the new install and click on the restart now. Now we will get such type of view after successfully installation. Now we check this is installed. More. After successful installation, you can log in into the system and we can access the. Let's check out how we will do it by using VirtualBox. So when we click on that VirtualBox, here is the option download VirtualBox software. Okay, here is a link. So click on that, you will get this VirtualBox software. After installation, right click on that VirtualBox, click on next. After that, click on next. It will create this registry information. Click on next. Warning network interface. Click on yes. Install and copying files. It took some 1 minute to install the VirtualBox. After successful installation, click on the finish. Okay. So you will get the view such a type. So here we have options. If you want to create new virtual machine, click on the new. If you want to add existing virtual machine, click on the add. Okay. So here is also import export option. If you want to export your virtual machine, then we can able to. If you want to import, then we can able to.
Okay. So here we need to specify the demo name. After that path, same memory size, how many memory we need to use. Here I selected 3 GB. After that, create virtual hard drives. Now, size by default, the recommended size is the 10 GB. Here by default जो VDF और format है VDI virtual disk image वही select करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है. After that, fixed size storage on physical drive, fixed size रखना है, dynamic रखना है. There is a difference between dynamic and fixed size. Dynamic में क्या होता है, जैसे जैसे requirement बढ़ती है वैसे वैसे spares add होते चलता है. And fixed size में क्या होता है कि dedicated size होती है. So we will use fixed size. And after that, file locations and size. So here I will use 40 GB as a fixed size. After that, just wait for 10 to 15 minutes. Your VM will be created. Okay. So similar way you can able to access. Similar way से हम access कर सकते हैं. So now check out whether our VM is created. Still it is not created. No. See, it required only 20 to 25 minutes. Maybe दूसरा version लिया है, latest version, so that's why it took more time. But मैंने 16 भी use किया और 18 भी use किया. It took very less time. 20 minutes is max. After that, we need to perform some these command, basic operation commands. And that will identify host name. We will check IP address. We need to set host name. We need to change the host name and some network related information. Today we'll discuss about that, and after that we will close the session. Just once our installation is completed, so we can able to perform this operation. Because right now I don't have any OS instance. Copying finally. Yeah, done. Your installation is complete. You need to restart the computer in order to use. Just click on the restart now. Your VM will be restarted. Now we can able to access that instance. System अगर restart हो रहा है. 2020.04 version. It took some extra time when first time login into the system.
It's showing the message to retain your computer, press Control plus Alt. अगर सिस्टम के अंदर VM के अंदर है तो Control Alt से आप माउस कर्सर बाहर आ सकता है। अपडेट के लिए मैसेज आया तो रिमाइंड भी लेटर करना है, अपडेट नहीं करते बैठना है। Finally, it will complete. See, enable to view. The user will be created. Click on that, enter password. Password is a red hat. Desktop. System both. अगर एक इंस्टॉल करके रखना चाहिए था, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के लिए बहुत टाइम लगा। Click on the skip. Next. Next. Done. Finally, our installation is completed. So now, if you want to access this instance, we'll use terminal. Okay. So everything will be accessed by using a terminal. Here is a browser. This one is a software, so Ubuntu software. So by using this, we can able to install the predefined software. So click on that and type terminal. Okay. So here we need to click the show applications, and I will type the terminal. We successfully installed the Windows 2.0. Let's check out the latest version, lsb-release. Type in A all, so it will display the information. So no LSB module distribution ID is Ubuntu, description Ubuntu 2.20.04, is date 20.04, and code name Focal. Okay, so
So this is the command to check the latest version. If we have Ubuntu 17, 16, 14, just check out by using lsb underscore release hyphen a command. Okay, it will show the release information. Now, just we'll use 4 to 5 commands. We'll discuss about that. First of all, we'll discuss the host name. Okay, so this is the unique name given to the your system host name, and your host name right now here is your host name. Arvind, this one, Arvind and dash virtual dot machine. This one is a host name, and the first name is your username. Okay, so to check the host name, we have command host name. Enter. So this one is your host name. बहुत बड़ा है, we need to change that host name. So we have two options. First, by using command, we can able to change, and second, by using configuration file, we can able to change. So first of all, let's do it by using configuration file. We can able to change. So or otherwise, right now, we do it later by using a configuration file. By using command, we can do it now. Okay, what is the reason behind that? For that, we need to understand the concept of VA editor. So first of all, we'll discuss about the VA editor, and after that, we can able to change the configuration. So by using command, we can change the host name. Okay, so for that, here I will use sudo super user, so, host name ctl set hyphen host name. So that the name given to the host name. For example, here I will use admin. Host name is a admin, or we can say that PESCOE is a word key. Check out here. He will ask for the password. Now the host name will be changed, but यहाँ दिखाई दे रहा है आपको. Okay. So ये जब तक reboot होता नहीं तब तक यहाँ दिखाई देगा. By using hostname command, just check out. Hostname will change. See, we'll get that information. PSCOE is your hostname. Earlier it was Arvind hyphen virtual hyphen machine. Right now we have PSCOE. So अगर इसको मैं reboot करूँगा, हम इसको reboot करें, automatically उसका जो host name है वो change हो गया है. होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन वगैरह जो रहती है अपडेट होने के लिए वी नीड टू रिबूट द सिस्टम. वंस एक ही बार होस्ट नेम चेक करते हैं, अगर वो बड़े साइज में है तो एज इट इज रखना है तो एज इट इज रख सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ही आप चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. To check the IP, we have a command IP-A. So these are the very basic commands by using that we can able to find out the IP address. Yeah, then we need to enter the login. System login, click on that. Patients. Now check out. Host name will change. See, we got our host name as a PSU. So जैसे भी host name change करते हो तो we need to reboot our system. Make a note of that. Now check out host name. If you want to change again, so we need to use same command. Which one? Host name sudo
etl set hyphen name name. Here I will add comment. So that means that command will not execute it. So command is nothing but helping text. So by using this command we can change the. Also we have that another command sudo cvi dash configuration file etc इसके अंदर host name की file. Using this way we can also change the host name. Enter. This one is a vi data. इसके अंदर जाके आपको चेंज करना पड़ता है. राइट नो ये चेंज करने की जरूरत नहीं बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ vi data. So first of all we'll discuss about vi data and later on we can able to perform. Close this. This one is a command to change the host name. Get the host name information. Now another command is there IPA. So it will generate the your interface. So now see we have two interfaces. This one is the first interface L0. So loopback only interface. It is a local. So then IP address is 127.0.01. Okay, हर system को loopback IP address होता है. We'll discuss in network chapter. And this one is my wireless interface name ENS33. मेरा wireless interface है. Is that here? This one ENS33. And this one is my private IP 192.168.79.128. Okay. So to get the information about private IP, so आपको क्या करना है? IPA command use करना है. Okay. So this is the command. Also we can use NMCLI network manager command line interface full form. So by using that we can get the network information. So ENSS connected wired connection. Okay. So Intel this one is for information and here is your IP address 192.168.70.90. Okay, this one is a public IP subnet. Get that information. This one is your private IP. So NMCLI is also command to get the information. If you want to check the command, then we will use hostname command. We want to change the host name, then we will use host name set that actual name. आपको change करना है. The information about latest release. Latest में जो भी release है उसके लिए check करना है कौन सा Ubuntu हम use कर रहे थे. Then I will use lsb-release. lsb_release -a. So -a, not AA. This is the command. And after that, if you want to change the configuration, then we'll use vi/etc/hostname. For that, we need to understand the concept of vi and vim editor. We'll discuss about that. उसके detail study करने के बाद में हम configuration change करेंगे. See. These are the command and last one is a NMCLI. By using that we can get the network information. CLI network manager command line interface. These are the commands that tomorrow's lecture. Tomorrow we'll conduct one more lecture. I will share the time. Tomorrow we'll conduct at 2 p.m. 2 hour lecture. So I will share the link. You can join the lecture. But make a note of that. ये practical अभी आपको perform करना है. Okay. So आपके लिए tasks आज के जो available है. Just 1 minute. So first of all,
you need to download. It is mandatory for all. First, you need to create that report. You need to write how to install VMware. Share after 5 to 10 minutes. I will share the link also. Second, download base to 16.04. Do it as a 16.04. 64 आर्किटेक्चर है तो भी यही डाउनलोड करो बिकॉज इट टुक लेस टाइम 20 के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है 04 इंस्टॉलेशन के टाइप में आपको सिंगल डिस्क स्प्लिट से इंस्टॉलेशन करके चेक करना है ओके एंड आफ्टर दैट आपको जो कमांड्स बताए मैंने वो परफॉर्म करके आपको रिपोर्ट में लिखना है विच कमांड्स release that nmcli. Last one is a host name change. That host name ctl set hyphen host name जो command है वो use करना है आपको. You need to perform that task. Okay. So I will share link also. आपको मुझे link भी send करता हूँ मैं जिसके अंदर आपको report send करना है today's report. I will share that link. ये रिपोर्ट जो है ये डेली के डेली आपको सेंड करना है. आप A4 साइज के पेपर पे लिख सकते हो इसको. I will show you कैसे दिखता है. That you need to enter email address, full name, mobile number. These are the Linux day. We will add further all days. Okay, so just select day. After that, current date. Select today's date. Today is the 24/04/2021. After that, आपको एक फाइल क्रिएट करना है and upload that file. So आप लिखो मत. We can also there is no need to write the things. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसके ही वर्ड फाइल बना दो. कैसे कैसे किया है मैं पीपीटी भी शेयर कर रहा हूँ. While performing the operation आप उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के ऐड करो उस पे. After that उसके सेव करके वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल. You have to both option word or pdf. You need to submit that report on daily basis. Okay. ये आपको टास्क है. ये टास्क भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ. This session is completed. We'll take attendance and after that we will close the. वैष्णव is there? अटेंडेंस देने के लिए अनम्यूट करके अटेंडेंस दीजिए. वैष्णव is there? Yes, sir. पूर्वा, प्रणाली,
अपेक्षा कांबळे, जो अटेंडेंस तो नाम बोलो, मैं उनकी अटेंडेंस डाल देता, रेस्ट ऑफ ऑल विल बी जीरो, वन बाय वन. अनिकेत कांडनगिरे, Just 1 minute. Aniket, स्वप्नील बनकर, 1 minute. अपेक्षा कांबळे. अपेक्षा आहे का? Yes, sir. क्या अपेक्षा? स्वप्नील बनकर सर, लेफ्ट करू नका. स्वप्नील बनकर, Just 1 minute. Next. प्रकाश जोडगे, Akash. प्रकाश, Prakash. प्रतीक गोसावी, Sir, is my attendance record? Who is this? Sir, अपेक्षा कांबळे. Yes, your attendance is recorded. Thank you, sir. प्रतीक गोसावी, Pratik. गोसावी, Attendance Pratik. Next. नारायण कळसकर, Yeah, done. Naran. Next. संकेत रंदे, संकेत रंदे, Sanket. Next. प्रज्ञा खंडाळे, प्रज्ञा रोल नंबर खंडाळे, काय तुझा? एम रजिस्ट्रेशन केलं नव्हतंस का तू? केलेलं आहे सर. नंबर नेक्स्ट. वेदांत गोचे, वेदांत, रोल नंबर 25, 25 वेदांत. नेक्स्ट. आले का अटेंडन्स सर्वांचे? शुभम कुलदीप निंबाळकर 43, थर्टी टू, कल्याणी शेवाळे, सूरज. सूरज काटकर, चलिए नेक्स्ट. कल्याणी शेवाळे, नंबर काय कल्याणी? 17, नेक्स्ट. शुभम सोनवणे, आवाज येत नाहीये. शुभम रोल नंबर? 57, रोल नंबर सांगा. 57, 56 ओमकार. 57, शुभम सोनवणे, 1 minute. ओमकारची अटेंडन्स. नेक्स्ट वन ओमकार आहे. ओमकार झाले. नेक्स्ट. शुभम सोनवणे 57, शुभम सोनवणे 57. येस सर. नेक्स्ट. कोणी राहिले का?
ओके, ऍबसेंटचे स्टुडंटचे जे आहे ते मी टाकून देतो. त्याच्यामध्ये जर कोणी राहिला असेल प्रेझेंट वगैरे तर मला सांगून द्या पण. Okay, we'll close the session after 10 to 15 minutes. I will share the document and do the practical. And for tomorrow's lecture, I will share the link also. Okay, so